जैसा कि हम सभी पॉडकास्ट के साथ करते हैं। क्विकली आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, कैसे स्टार्ट किया था एंड एजुकेशन क्या थी, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Sure. So, shall I start? या श्योर। Okay, great, great. So, thank you so much, firstly, Hariom, for inviting me. And let me just give you my quick introduction. I run an agency called Sorted Brand, where we, help founders and CXOs and coaches empower them with their personal branding and PR. We manage their online reputation. So, till date, we have worked with over 150 clients globally, but our major clientele is in India, UAE, US, and UK. And we help them with our content creation and storytelling skills, and PR is definitely one of our major services as well. So a lot of viral content that you see on LinkedIn, high chances it's written by our team. So yeah, that's what we are basically doing. And I have done my graduation in English honors from Delhi University, and I've done my master's in journalism and mass communication from Amit University, Noida. ओके, ग्रेट ग्रेट, वाह। ओके, सो ये पर्सनल ब्रांडिंग की एंड कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि आपने जर्नलिज्म किया हुआ है एंड इंग्लिश में आपने बैचलर्स किया हुआ है, सो हाउ दिस पर्सनल ब्रांडिंग कम्स इनटू द पिक्चर। So my degree doesn't has much to do with my career, to be honest. It definitely gave me that direction and base wahi se shuru hua hai, but या not much of the correlation is there between my personal branding and my education, because while I was doing my master's, so till graduation, I had not thought much about starting my own business. Thought ओके much का, in fact, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था that I will do my own ओके business. I always thought I'll get into a full-time content writing job, and that's what I did for 5 months. It did not work out, so that's the reason I had to go for my master's. Otherwise, I had no such plans. So while doing my master's, I really wanted a good internship in the top publication, media publication house like TOI HT. मतलब मुझे था कि कुछ भी हो जाए, मेरे को यहाँ पे एक internship का stamp चाहिए. And that's how I got into LinkedIn content creation and personal branding. Because whenever I used to open LinkedIn, I used to see a lot of people posting content, and I was always a social media lover. I always loved writing, and that's the reason I went for English honors, because I loved writing, and English always been my favorite. तो वहां पे जब देखा कि people are posting a lot of content, and being a active social media user, I thought, why just stick to Facebook and Instagram, and let's just post something on LinkedIn too. Now, when you start posting and when you are into social media, you are always, curious about कितने likes आए, कितने राइट, comments ट्रू। आए. So even I was equally, curious, and I always used to wonder, yaar, if he's getting 100 likes, why am I not getting it? And what am I missing out? And why am I not growing? So I took workshops. I took efficiency workshop. I, asked for help from random people, and that's how it all जीनियस। started. And soon I realized, okay, this is something I'm loving, and rest is history. ओके ओके, ऐसा तो स्टार्ट हुआ, बट फाइनेंशियली आपको यहाँ से, मतलब जो होता है ना कि अभी आप फाइनेंशियली इस बिजनेस पर डिपेंडेंट है, तो वो पहला क्लाइंट या फिर वो पहली इनकम कैसे जनरेट हुई थी, क्या था, कोई क्लाइंट था या फिर किस तरह से आपने वो इनकम जनरेट किया था। So पहले मैंने as I told you internships देखने के लिए हम्म LinkedIन शुरू किया था. हम्म, तो I did 2-3 paid internships. I've never done any unpaid internship in my ओके, life. तो मेरे को ये तो बहुत ही क्लियर था कि जो भी काम करूंगी it has to be paid. या तो मैंने 2-4 पेड इंटर्नशिप करी, बट वो बहुत ही हार्डकोर कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप थी. उसके बाद फिर आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड मैंने रूता मित्तल है, एक बहुत बड़ी फ्रीलांस कोच है वो अब. तो आई टुक हर कोर्स ऑन फ्रीलांसिंग, and in that course, right from how to create a portfolio to how to get a high ticket client to how to pitch to clients, हर चीज mentioned थी. And it was a pretty expensive course. उस time के हिसाब से it was for 42,000 something. And because I took an expensive course while pursuing my masters, मेरे को था कि नहीं यार, I don't want to waste it, and this course might change my life, so I have to take it seriously. तो मैंने literally उस course का एक एक module बहुत अच्छे से करा, and उनके सारे steps को follow करते हुए I started reaching out to people on LinkedIn, and वहां से शुरुआत हुई पहले client की. I got my first client from Australia, and he paid me 50,000 rupees. एंड जब आपको फर्स्ट पेइंग क्लाइंट मिल जाता है, तो आपको एक वैलिडेशन मिलती है कि आप कुछ सही कर रहे हो. यू आर एब्सोल्युटली नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ तो सही है. कोर्स जो आपने लिया वो स्कैम नहीं है, जो सिखा रहा है सही है. सो बिकॉज अभी बहुत अवेयरनेस है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत लोग मतलब बताने के लिए हैं, बट उस टाइम पे तो उनका कोर्स ही उतने लोगों ने नहीं किया था. आई वाज अमंग्स द फर्स्ट 500 पीपल टू टेक हर कोर्स. तो मेरे पास कोई पूछने के लिए भी नहीं था कि कोर्स कैसा है.
So it was a big bet for me, but it worked out. या ग्रेट। अभी तो लाइक जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो आपको क्लाइंट्स मिलना ईज़ी होता है। बट जब आप पहला क्लाइंट के पास अप्रोच कर रहे होते हैं, तो Hmm. दे वांट समथिंग कि आपने पहले पास्ट में क्या किया हुआ है। Hmm. तो आपने उनको पास्ट का क्या एक्सपीरियंस Hmm. दिखाया, फिर क्या इंटर्नशिप दिखाई, क्या दिखाया था पहला क्लाइंट लेने के लिए? सो वो कोर्स बेसिकली बिगिनर्स के लिए ही है। तो हुँ, एज आई मेंशन उसमें एक एक चीज mentioned थी। सो फॉर हुँ, बिगिनर्स शी एडवाइज्ड अस कि आप एक केस स्टडी प्रिपेयर करो, वेदर यू पिक अप अ क्लाइंट ऑन योर ओन। आप खुद हुँ, से मतलब उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लिखो कि कैसे उनका प्रोफाइल बेटर हो सकता है। फिर सोशल मीडिया हुँ, मार्केटिंग पे कैसे इंस्टाग्राम बेटर कर सकते हैं, आप एक हुँ, केस स्टडी बना के दिखाओ। और यू ओके, गेट अ फ्री क्लाइंट, चाहे फेसबुक ग्रुप से कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव जो बिजनेस करता हो हुँ, ऑनलाइन, जिसको आप हेल्प कर सकते हो। बिकॉज it's all about online services. The course is all about online services like हुँ, content writing, social media marketing, etc. हुँ, So, she asked us to just create a few case studies, whether paid or unpaid, to show it to that first client. And that worked for me. Also, उस course की जो सबसे अच्छी बात थी, which actually worked for me, was कि mindset कैसा ओके, रखना है आपको, वो सिखाया हुआ था। कि एक तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत रिजेक्शन आएंगे, कोई आपको रिप्लाई ट्रू, नहीं करेगा, बहुत सारे लोग नो बोलेंगे, तो यू हैव टू बी ओके। तो अब जब आप हुँ, नए होते हो, आप नहीं प्रिपेयर्ड होते शायद इतने फेलियर्स के लिए, रिजेक्शन के लिए, तो वो उस चीज राइट, के लिए हम प्रिपेयर्ड हो गए थे। फिर हुँ, सेकेंडली उसने हमें ये एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, दैट आप चाहे पहली बार ही चीज क्यों ना कर रहे हो, यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। अगर आप एक या अपने आप को ट्रू, फ्रेशर की तरह रखोगे, तो आपको हुँ, फीस भी वैसी ही मिलेगी। बट यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू साउंड लाइक एन एक्सपर्ट, यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ लाइक एन एक्सपर्ट। तो हमारे जो हुँ, पोर्टफोलियोज भी हमने बनाए थे, वी रोट आवर सेल्फ एज social media marketing ninja, social media ओके, marketing expert. So that actually हाँ। worked for us. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड अभी आप लोग 150% के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसे लोग होते हैं? क्योंकि ऑल दीज आर दीज पीपल आर फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड। जैसा कि मैं भी कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, नई चीजें सीखने को मिलती है, उनकी नई रिक्वायरमेंट। ऐसा भी आपके साथ भी होता होगा कि नई रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग क्लाइंट्स हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है क्लाइंट्स के साथ? अच्छा, जस्ट टू गिव यू लिटिल क्लैरिटी, 150 क्लाइंट्स के साथ एक साथ काम नहीं कर रहे। हाँ, अभी बट तक या ऑल 150 ओवर क्लाइंट्स इन द हैं। जर्नी। हाँ, या राइट, हाँ, हाँ, हाँ। ऑल ओवर द नाउ जर्नी। द प्रोसेस इज क्रेजी बिकॉज एवरी क्लाइंट इज डिफरेंट, सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। एंड वो रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती जाती हैं विद टाइम। सो द या प्रोसेस इज क्रेजी, इट्स मैड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी क्लाइंट। एंड जब आप शुरू शुरू में ग्रो कर रहे होते हो, तो आपका मैनेजर कोई नहीं होता, यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट एंड टीम विद ऑन योर ओन। तो इसीलिए मतलब यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, एंड यू आर ऑलवेज आइदर टेकिंग केयर ऑफ द टीम और यू आर टेकिंग केयर ऑफ द क्लाइंट्स। सबकी रिक्वायरमेंट्स को समझना, उस हिसाब से डिलीवर करना। But then in the whole process, clients आते हैं, जाते हैं, and you have to just, keep learning and growing. या So it's a mad process, but it's fun. या ग्रेट। एंड अभी आप इंडिविजुअली आई थिंक आपकी टीम होगी जो आपके साथ काम कर रही होगी, राइट? Hanji, we have a राइट, team of 8 people right now. ओके। सो इट्स आल्सो द चैलेंजिंग टास्क कि आपका जो विजन है, आपकी टीम का भी वही विजन होना इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। सो हाउ यू फाइंड दोज पीपल्स, एंड कैसे वो लोग मिलते हैं जो आपके विजन से अलाइन होते हैं, या फिर कैसे आप उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। So, as they say, your teamwork does the dream work. आप अकेले एक बिजनेस नहीं चला सकते ट्रू, हो। एंड एजेंसी तो बिल्कुल भी अकेले नहीं चल सकती। आप एक सोलोप्रेन्योर या तो बन के रहो, एक फ्रीलांसर, तो आपकी इनकम जो है एक पॉइंट पे आने का रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट इफ यू रियली वांट टू ग्रो एज एन एजेंसी ओनर, आपको एक टीम चाहिए अच्छी। नाउ आई लाइक द फर्स्ट कॉल दैट यू गेट ऑन विद, यू यू इसमें बहुत बार क्लैरिटी हो जाती है कि इससे सिनर्जी मैच होगी, इससे नहीं हो। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर टू गुड ऑन द इंटरव्यू कॉल्स कि मैम हम तो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म, एंड वी वांट द एजेंसी टू ग्रो टू एक्स एक्स रेवेन्यू, एंड ये करना है वो करना है साथ में। बट व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग, दे डू नॉट रियली deliver what they promise, and the goals are not aligned. Like I don't want only the company to grow कि आपकी पर्सनल ग्रोथ चाहे हो या ना हो, मेरे को अपनी एजेंसी की ग्रोथ से मतलब है नहीं। आप ग्रो करो, एजेंसी अपने आप ग्रो करेगी। आप अच्छा काम करो, द एजेंसी विल ग्रो ऑटोमेटिकली। But still, I think a lot of hiring and firing takes place. Matlab day one say, if you find people who are aligned with your vision, if you like find such people, you are very lucky. But otherwise, the only way to build that solid team, to build that core team who aligns with your vision, is by hiring and firing. Hire faster, hire fast, fire faster. Yeah. Right, true, true. So OpenAI and artificial intelligence is booming in the market, and ChatGPT is
it's viral and everyone is using it, even content creators, engineers, and everyone. So how you are using it and it is impacting your work, or you are using it as a tool to grow your business? Can you brief that Of also? course, I am, leveraging it to grow my business. Yeah. I'm not scared of chat GPT because till date, touchwood, no client has come to me and said कि नहीं अब chat GPT आ गया है तो Mm-hmm. हम आपके साथ नहीं काम कर सकते हैं. I have Mm-hmm. got a few questions on the discovery call की महिमा अब तो content chat GPT लिख देता है तो why should we work with you? But I Mm-hmm. think आप कितना भी chat GPT use कर लो वो जो एक human touch है copywriting में वो chat Mm-hmm. GPT नहीं ला पाएगा, especially when there are personal stories involved. So as I Right. told you, we are big on storytelling and content creation. तो Mm-hmm. हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं लिखते हैं, 5 tips to grow on Mm-hmm. LinkedIn, 5 tools to use for your business, but we share a lot of personal stories on social media, which Yeah. actually helps in making the real connection and building that thought leadership. Hence I don't think कि chat GPT is like a threat or competition to us. Mm-hmm. हम डर तो बिल्कुल भी नहीं रहे, बट हाँ हम उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल को डेफिनेटली यूज कर रहे हैं. वी आर हेल्पिंग इट, Okay. वी आर यूजिंग इट टू जनरेट आइडियाज फॉर आवर कंटेंट और क्लाइंट्स Okay. कंटेंट. We are using it at times to write posts for a few clients who are okay with chat GPT. Like Okay. we have, I like trust me, we have 2 3 Mm. clients who have said कि यार लिख लो chat GPT से कोई दिक्कत नहीं है. So Okay. हम थोड़ा बहुत वहाँ पे भी use हैं when it comes to writing prompts because Okay. जैसे ही chat GPT आया, lot of creators started experimenting different prompts and Mm. trying different prompts, and उन लोगों ने काफी innovative prompts निकाले जिससे काफी अच्छे अच्छे results आए हैं chat Right. GPT पे. बट पर्सनली मैं आज भी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानती हूँ फॉर कंटेंट Okay. आइडिएशन एंड Okay. कंटेंट क्रिएशन. तो जब मैं बिल्कुल ही लॉस्ट फील करती हूँ या फिर जब मुझे ऐसा लगता है कि यार चल ठीक है ट्राई, तो मतलब आई फील कि मेरे को चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए. ना मैं उससे डरूं, ना मैं उससे भागूं, और ना ऐसा हो कि मुझे यूज ही नहीं करना आता. सो जस्ट टू प्ले अराउंड मैंने ऐसे प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, हाय प्लीज गिव मी सम कंटेंट आइडियाज, नहीं प्लीज गिव सम कंटेंट आइडियाज फॉर एन एजेंसी ओनर ऑन लिंक्डइन, एंड देन ही गिव सम वेरी बेसिक आइडियाज एंड आई एम लाइक छोड़ यार मैं खुद ही लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, Right. तुझसे नहीं हो पाएगा. Okay. तो या कभी कभी कोई पोस्ट ऐसी होती है कि मैं उसकी हुक लाइन अपनी अच्छी सी फ्रेम कर लेती हूँ Mm. स्टार्टिंग, बट आई नो कि अब आगे के पॉइंटर्स कुछ बेसिक से टॉपिक पे हैं, तो आई जस्ट राइट दैट प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी और वो पॉइंटर्स आ जाते हैं, आई जस्ट कॉपी Mm. पेस्ट. तो वो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्टली रिलाई कर ही नहीं रही हूँ चैट जीपीटी पे. Okay. Okay. And आपने लाइक यूएसए एंड इंडिया कनाडा, आई थिंक यूएसए कनाडा एंड यूके के क्लाइंट्स के साथ काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दुबई है? बट दुबई. दुबई. ओके. यूएई या. तो या मल्टीपल नेशंस के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इंडिया के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करिए ना, क्योंकि एज अ कंट्री चेंज होती है, नेशन चेंज होता है, तो थोड़ी सी कुछ चीजें भी चेंज होती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो माय बेस्ट एक्सपीरियंस हैज व्हेन आइदर इन इंडिया और इन यूएई, दुबई एंड शारजा के काफी क्लाइंट्स के साथ काम किया है. सो वहाँ के लोगों के साथ काफी मजा आता है, एंड इंडिया तो फिर अपने हैं ही क्लाइंट्स. यूएस यूके वी आर एक्सपैंडिंग, वी आर गेटिंग अ होल्ड ऑफ देम एज वेल. हम्म. बट इंडिया में क्या है कि एक रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सबकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, एंड मतलब आप एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड कर पाते हो अच्छे अच्छे लोगों के साथ, top राइट. leaders के साथ. Now right now we are great brands like my school and university and many more personalities personally, and work so closely with them, because personal branding में क्या है कि there is no manager or assistant who can work with us. हमारे साथ डायरेक्ट क्लाइंट्स ही मीटिंग्स पे आते हैं, कोई और उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता है. राइट. सो इट्स गुड टू वर्क डायरेक्टली विद सच बिग पर्सनालिटीज जिनको आप जानते हो. बट द ओनली प्रॉब्लम विद इंडिया इज समटाइम्स देयर इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कि आपके इनवॉइसेस ओके. नहीं क्लियर हो रहे हैं, या आप मतलब क्लाइंट्स थोड़ा माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, या वो वीकेंड्स नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर pay scale thoda low hai. राइट. And that's the reason most of the people in our industry move to different countries. A lot of people start with US UK. मेरा भी first client वैसे तो सिंगापुर का था, sorry ऑस्ट्रेलिया का था, and then I got Singapore. But मेरा US UK मतलब उतना amazing experience नहीं रहा है, to be honest, because the clients there are quite strict, they are very professional, ट्रू. micromanage नहीं करेंगे, but what they want. तो या. इसीलिए मैंने यूएई एक्सप्लोर किया. वहां पे काफी अच्छा क्राउड है एंड काफी ज्यादा मल्टी कल्चरल है. सो वी आर वर्किंग विद फ्यू पाकिस्तानीज ऑल्सो, वी आर वर्किंग ओके. विद इंडियंस बेस्ड इन दुबई, वी आर वर्किंग विद देम द लोकलाइट्स एज वेल. तो ओके. मल्टी कल्चरल है पूरा, काफी अच्छा लगता है, एंड इट्स अ वेरी ओके. लाइक इट्स अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल्सो. तो मतलब अच्छा, एंड देन सिनर्जीज भी मैच होती हैं, बिकॉज अब जैसे टाइम जोन का बहुत डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट 1.5 आवर्स. यूएस ओके. यूके के क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में ही हम्म. चैलेंज होता है, दिन रात का डिफरेंस है. सो उस सेंस में भी मुझे यूएई काफी पसंद आता है कि टाइम जोन इज आल्सो नॉट एन इशू.
So मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस इंडिया एंड यूएई में रहा है, टू ओके। आंसर योर क्वेश्चन। ओके। एंड कुछ कैटेगरीज बता सकते हैं किस टाइप के क्लाइंट्स आपको यूएई में मिले हैं, लाइक वो किस फील्ड में है, किस तरह का काम करते हैं? So most of them are in blockchain, crypto, ओके। NFTs, because that particular industry is booming in UAE. Even a lot of Indian founders are opening their companies in India, जो blockchain and crypto related है, because वहाँ पे laws थोड़ी easy है crypto को लेकर, acceptance better है, and then it's a tax free place, तो वो तो है ही advantage. उसके अलावा मतलब different industries के हैं. We have one client from beauty industry, we have three clients from real estate. Now real estate is a very important part in UAE. सो वहां पे लोगों को बहुत क्यूरोसिटी होती है रियल एस्टेट के लोगों को अपनी मार्केटिंग कराने की, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे हैव गुड मार्केटिंग बजट्स, बट all they need is more and more and more promotions of their properties. So we have Okay. clients in Let's move ahead. So, what's your future plan? What you're thinking for the coming 5 years or 10 years? to travel as much as possible, because I'm not Okay. a traveler. I don't travel much. So now I have that urge to travel more, to Okay. grow my agency, to employ more people, to create larger and bigger impact by sharing more stories online. And yeah, to just be happy and to put my agency on autopilot someday. I Yeah. mean, today also I've delegated a lot of stuff, but there's still a lot Okay. of duties that only I can manage. So, I Okay. wish that someday I dedicate the entire work of my agency. Okay. So this is an important thing. You are talking about automating the things and automating our company or agency or our work. So what do you think? How this can be possible? Because it's an important task. If you want to travel the world and enjoy life and just want to automate your stuff, so what is the thing? Core things you think important here? So as I told you, I'm still in that process. So I might not give the best answer, but someone who's just starting out with the automation delegation Mm, part, one thing I would like to advise is that be okay to spend money. It's not a mm, expense, it's an investment. So whether on people or on tools, be very comfortable spending money. Now, mm. even for the smallest of things, wherever possible, I have, used tools to, automate the process, whether it's for Okay. sending invoices or for communication. I have, taken a lot of tool subscriptions, even for like Okay. Zoom. I get on so many calls. A lot of times there's no recording required, but every month it gets, debited from my account. Yeah, if I need a recording, मुझे सोचना ना पड़े, मेरे को फटाफट सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े, मैं तुरंत से रिकॉर्ड कर लूँ. Right. So whether it is tools or whether people, now there are certain people who I can, like maybe who are not, they were not required on an urgent basis, but मैंने hire करके रखा कि Right. मतलब जितना जैसे जैसे मैं automate करती जाऊँ, delegate करती Mm, जाऊँ, काम उतना easy रहेगा. Like there are certain things I can do still, like even now I can do. I have the time bandwidth, but क्यों करना है? मतलब if you can delegate. So okay. it is definitely going to cost you money, but the ROI is much higher. It saves a lot of Yeah. time, effort, and Mm, you can focus on scaling your business. मतलब ऐसा नहीं है true. कि मुझे automation and delegation करके chill करना है and travel करना है. Mhm. As I also mentioned, I'm not a travel freak, तो मुझे बहुत Mm, ज़्यादा भी नहीं करना. But mm. in that free time after delegation and automation, I want to grow my agency. So Okay. उस growth के लिए मतलब while I focus my time and energy on the growth part, I would Mm. rather delegate rest of the things to my team. Okay. Okay. Thank you so much. And yeah, But I loved, connecting with you. It was great. yeah, Thank you so much for inviting me. yeah. Thank you so much. Thank you, Mima. And Thank you. nice to meet you. Thank you so much. Great. Goodbye. Goodbye. Thanks so much. Bye. Yeah. Thank you. Thank you so much. Bye.